Hi, I welcome you again to Vamsi's Golden Series. I'm starting with Indian economy. I divide Indian economy into six parts. One, monetary policy and fiscal policy. Second, external economy. Third, evolution of banking, insurance, etc. Fourth, sectors of economy, agriculture, service sector, वगैरह. Fifth, Indian economy evolution, planning and reforms, वगैरह. And finally, survey, budget, current updates. Don't make any running notes, just watch this video like that. In this video, we are going to discuss the first part, monetary policy and fiscal policy. Monetary policy is controlled by central bank of that country. In our case, it is Reserve Bank of India. So RBI controls monetary policy, whereas fiscal policy is controlled by the government of India. Hope you understand this point. लेकिन ये करते क्यों? What is the objective of monetary policy and or fiscal policy? The objective is simple. Any country wants to grow. So the objective is economic growth, economic development. But economic development or economic growth will not happen alone. जब growth होता है, inflation भी होता है. So prices भी बढ़ जाता है. At the same time, price stability भी maintain करना. So it is a balancing act. अगर कंट्रोल नहीं इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ग्रोथ भी एकदम से नहीं चाहिए. You see, unsustainable or uncontrolled growth is very dangerous. So we need growth along with price stability or with controlled inflation. So that is the objective of these policies. So पहले हम monetary policy से शुरू करेंगे. So monetary policy is maintained by or controlled by Reserve Bank of India. Okay. कंट्रोल करने के लिए उनके पास दो तरीका का टूल्स है. वन इज क्वांटिटेटिव टूल्स, सेकंड इज क्वालिटेटिव टूल्स. पहले क्या टूल्स का नाम देखेंगे, फिर वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा. क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या है? कैश रिजर्व रेशियो CRR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR. डोंट वरी, ये क्या है मैं बताऊंगा आपको, वन बाय वन देखेंगे. पॉलिसी रेट और रेपो रेट, बैंक रेट, marginal standing facility rate and open market operations. These are tools of quantitative. Similarly, qualitative tools में क्या है? Loan to value ratio, consumer credit control, rationing or public priority sector lending, moral suasion. अगर nothing has worked out, then direct action. इन टूल्स को बोलेंगे डायरेक्ट और सेलेक्टिव टूल्स. ये क्यों भी मैं बताऊंगा. और क्वांटिटेटिव नाम से ही बताया गया है, क्वांटिटेटिव. सो इनडायरेक्ट टूल्स. सो दीज आर ऑल वेरियस टूल्स दैट RBI हैज. अब देखते हैं वन बाय वन इसका क्या मीनिंग है, उससे क्या होता है. नाउ sometimes such silly questions also come in exam because IAS is easy, so he cannot ask very difficult questions. With reference to Indian economy, consider the following: bank rate, open market operations, public debt and public revenue. Which of the above are components of monetary policy? Even you do not know anything, you just know what are the tools, still you can answer the question. Bank rate is a part of quantitative tool. Open market operation also you come across. So 1 and 2 are tools of monetary policy. Very silly question. Chalo, let's start the topic. When people have money, they go and deposit in banks. So the money of people is lying with the banks. वे लोगों को बोलेंगे ये हमारा डिपॉजिट है बैंक्स में. सो पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक्स. बट ये मनी बैंक के लिए लाइबिलिटी हो जाता है क्योंकि जब भी लोग वापस मांगेगा बैंक को देना पड़ेगा. सो दिस मनी इज लाइबिलिटी फॉर द बैंक. वे लाइबिलिटीज दो तरीका का होंगे, डिमांड लाइबिलिटीज, दूसरा टाइम लाइबिलिटीज. टोटल मिलके बोलेंगे नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज. इसी नाम से ही समझ में आएगा. डिमांड लाइबिलिटीज देखिए, सपोज सेविंग्स अकाउंट, आपकी सेविंग्स अकाउंट में मनी है, आप जब भी चाहते हैं तो जाके विथड्रॉ कर सकते हैं. सिमिलरली आपकी करंट अकाउंट में मनी है, यू कैन विथड्रॉ एनी टाइम.
ऑफ कोर्स लिमिट होता है, पर डे इतना विथड्रॉ कर सकता है वैसा, बट आपका ही पैसा है का मतलब इट्स नॉट दैट यू वांट टू विथड्रॉ यू कैन डू इट. सो दैट्स वाई डिमांड लाइबिलिटीज. दूसरा टाइम लाइबिलिटीज. सपोज यू सी यू हैव पुट योर मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट. तो फिक्स्ड डिपॉजिट सपोज आपने 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया. क्या होता है 5 साल के बाद ही आप लेंगे. अगर आप चाहते हैं तो तोड़ के भी ले सकते हैं, बट जनरली हार्डली एनीबडी डज दैट. So mostly people why they put in time liabilities because टाइम डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है, इसलिए करंट अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा. सेविंग्स में भी 4% मिलेगा ज्यादा से, फिक्स्ड डिपॉजिट में 9% 10% मिलेगा. सो पीपल आल्सो पुट इन फिक्स्ड डिपॉजिट सो दैट बैंक को भी एक भरोसा होता है ये लोग अभी मांगने वाला नहीं है, तो बैंक भी कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो सिमिलरली रिकरिंग डिपॉजिट्स लाइक आप मंथली इतना इतना पे करो, मे बी 1 साल के बाद आपको इतना रिफंड करेंगे. सपोज आप 100 रुपया मंथली डालो, 12 महीने के बाद 1200 होगा, लेकिन आपको 1300 मिलेगी, लाइक दैट. सो रिकरिंग डिपॉजिट तो लेकिन मिलेगी 1 साल के बाद ही, सो दैट बैंक के पास एक फिक्स्ड गारंटी होता है, तब तक आप नहीं मानेंगे, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट दिस मनी समवेयर एल्स. सो नाम से ही समझ में आ रहा है ना, डिमांड लाइबिलिटीज जब डिमांड करेंगे कस्टमर बैंक को देना पड़ेगा. टाइम लाइबिलिटीज जब टाइम आएगा देन बैंक को देना पड़ेगा. सो टाइम लाइबिलिटी पे बैंक थोड़ा आराम कर सकते हैं कंपेयर टू डिमांड लाइबिलिटीज. दैट्स वाई टाइम लाइबिलिटी पे ज्यादा इंटरेस्ट पे करती है. दैट्स वाई पीपल आल्सो पुट मोर मनी इनटू टाइम लाइबिलिटीज. अगर बैंक के भी लाइबिलिटीज देखेंगे, टाइम लाइबिलिटीज डिमांड लाइबिलिटीज से कम 10 गुना ज्यादा होंगे बैंक के पास. समझ में आ रहा है ना. There was a question in 2014. That's why I'm saying very silly questions come in the exam. The terms marginal standing facility rate and net demand and time liabilities sometimes appearing in news are used in relation to. So these are all banking terms. Options भी देखो कितना अजीब किया है. Banking operations, communication networking, military strategies, supply and demand of agricultural products. That's why I'm saying if you understand the concept, these questions are very easy. So it is banking operations, right? पहले हम रिजर्व रेशियो समझते हैं. नाउ यू सी लोगों ने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया. सो लोगों का पैसा बैंक में है 2000 डिपॉजिट्स. नाउ यू सी बैंक कैसा चलेगी, हाउ बैंक गेट प्रॉफिट. इस पैसा को दोबारा लोन में घुमाएगी, किसी बिजनेस को लोन में देगी. तो अगर आपको 8% 9% इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वे 12-13% में लोन में घुमाएगी. जो मार्जिन है वे बैंक का प्रॉफिट है ना. नाउ यू सी अगर सारे पैसा लोन में घुमाता है बैंक, तो क्या है जब आप चाहते हो विथड्रॉ करना चाहते हो, बैंक के पास तो पैसा है ही नहीं, वे सारे कहीं और किसी और को लोन में दे दिया, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना. वेन एवर यू वॉन्ट टू विथड्रॉ यू शुड गेट इट. सो दैट्स वाई बैंक सारे लोन में नहीं घुमा सकते, कुछ डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए रखेगी, राइट. अदरवाइज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, मैं वैसा बता रहा हूं. अगर सारे लोग एकदम से, कभी कभी ऐसा होता है फ्लक्चुएशंस आता है, मे बी वी नेवर नो, अनएक्सपेक्टेडली और अनफॉर्चुनेटली सारे कस्टमर्स और मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स एक ही टाइम पे विथड्रॉ करना शुरू करे, तो बैंक के पास क्या होता है, शॉर्टफॉल होगा मनी. व्हेन शॉर्टफॉल होगा तो क्या होगा, कस्टमर को सपोज आप एटीएम से मनी विथड्रॉ करना चाहते हो लेकिन आपको पैसा नहीं आया, तो आप पैनिक हो जाएंगे. सो आपको डाउट आएगा क्या हो रहा है, का मतलब मे बी बैंक की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आएगी. सो देन यू टेल इट टू योर फ्रेंड्स आल्सो, देन मोर पीपल वांट टू विथड्रॉ, सो इट इज मोर डेंजरस. सो दैट्स व्हाई इवन टू कीप द secure, deposits of people secure, RBI want to control it. ऐसा नहीं बैंक का मर्जी से वे चलेगा. So RBI will take control on it. The main reason is to keep your people's deposits secure and to advance even बैंक का advancement का मतलब बैंक कितना करे क्या करे उसको भी वे थोड़ा कंट्रोल करना चाहता है. इसलिए two things, one is cash reserve ratio. Suppose you see NDTL, you know what is NDTL? नाउ बैंक के पास 100 CR NDTL है, उसमें कुछ परसेंट आरबीआई के पास रिजर्व करना होगा. दैट इज कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश. सपोज यू सी दिस इज ऑल बैंक के पास NDTL है, उसमें कुछ पोर्शन ऑफ मनी आरबीआई के पास रखना होगा. दैट इज कॉल्ड CRR. नाम से ही पता लग रहा है ना, कैश रिजर्व रेशियो. कुछ कैश को रिजर्व करो.
प्रेजेंट इट इज 4%. नो नीड टू मग अप दिस फिगर, इट कैन चेंज एनी टाइम, मे बी 0.5% आगे पीछे हो सकता है. इंडिपेंडेंस टाइम पे तो ये बहुत ज्यादा थी. सो 100 CR में 4 CR वैसा आरबीआई के पास रखना है. एंड यू नो आरबीआई इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेगा बैंक को, बट बैंक इज पेइंग टू द कस्टमर इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट ऑल्सो. बट 4% इज वेरी लेस. अगर कोई शॉक ज्यादा मिलता है तो इतना क्वेश्चन नहीं चलेगा. सो दैट्स व्हाई आरबीआई वांट टू सिक्योर मोर. दैट्स व्हाई सम मोर मनी, बट ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी. मनी ऐसे आइडियली रखने से कोई फायदा नहीं. दैट्स व्हाई सम मोर मनी ईदर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. बैंक कुछ और मनी को अराउंड 21-22%. इट कीप्स चेंजिंग, थोड़ा आगे पीछे. नो नीड टू मगअप, अप्रोक्सीमेट आइडिया रखे कितना अराउंड. सो इतना परसेंट ऑफ द एनडीटीएल इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज मोस्टली बैंक खरीद करके अपने पास रखना होगा. बैंक आरबीआई चेक करता रहेगा. अगर इन केस ऑफ फेल्यूर पेनाल्टी होगा बैंक को. ये पेनाल्टी कितना होगा वगैरह आपको याद रखने का कोई जरूरत नहीं, जस्ट ब्रॉडली समझ लीजिए. सो इसको बोलते हैं एसएलआर. स्टैट्यूटरी, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. क्योंकि इसको लिक्विड बनाना बहुत आसान है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एनी टाइम यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मनी, यू विल अंडरस्टैंड विद सम टाइम. सो गोल्ड सिमिलरली. इससे क्या है, इनफैक्ट इट इज द फंडिंग मैकेनिज्म टू गवर्नमेंट. नाउ यू सी ये सिक्योरिटीज गवर्नमेंट देगा, ये पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा. सो क्या है, गवर्नमेंट कैन यूज इट for some other developments. So it is a kind of debt instrument for government from the banks. Without knowing only बैंक से लोन ले रहा है गवर्नमेंट, है ना. SLR बोलते हैं. So CRR, SLR. Getting me? Now we understand very important what is tight money policy or dear money policy. Now you see, suppose RBI ने CRR को या SLR को इंक्रीज किया. नाउ आइडियली मे बी ऐसा होगा या नहीं होगा बात की बात है, बट क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली बैंक इज कीपिंग मोर मनी विथ आरबीआई और मोर मनी इट इज कन्वर्टिंग इनटू सिक्योरिटीज एंड आर गोल्ड. सो ऑटोमेटिकली बैंक के पास कम पैसा बचेगा लोन में देने के लिए. और एनडीटीएल 100 CR है. अगर CRR 4% है, एसएलआर इज प्रेजेंटली ये 21-22 के आसपास घूमते रहेगा. तो ये फिगर कोई काम का नहीं, जस्ट एक आइडिया के लिए बता रहा हूं. सपोज 21% SLR, 4% CRR, तो 25% तो सीधा खाली अलग से रखना पड़ा. ओनली 75 करोड़ से बिजनेस कर सकते हैं बैंक आउट ऑफ 100 CR. नाउ यू सी, अगर CRR 4 के जगह 5 हो गया, SLR 21 के जगह 30 हो गया, तो ज्यादा पैसा साइड रखना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली बैंक के पास जो पैसा बचेगा वो डिक्रीज होगा. सो मनी विद द बैंक्स विल डिक्रीज इफ CRR और SLR इंक्रीजेस. बेसिक कॉमन सेंस, राइट. नाउ ऑटोमेटिकली आइडियली क्या होगा, अगर बैंक के पास कम पैसा बचा तो बैंक ऑब्वियसली उतना ही प्रॉफिट कमाना है बैंक को, अदरवाइज हाउ विल इट रन. तो बैंक में इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, में इंक्रीज. सो दिस इज कॉल्ड टाइट मनी पॉलिसी. तो टाइट मनी पॉलिसी मीन्स अगर बैंक के पास पैसा कम है, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में और लोगों के बीच में पैसा का सर्कुलेशन डिक्रीज होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टाइट मनी पॉलिसी. सो इन दैट केस इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज. लूज और चीप मनी पॉलिसी मीन्स सपोज CRR और SLR डिक्रीज हुआ, आरबीआई ने कम किया, तो ऑटोमेटिकली बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा. मनी विद द बैंक्स विल इंक्रीज. इफ द मनी इंक्रीज दे मे रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट. They may reduce the interest rate. So this is the concept. This is loose or cheap money policy. Very simple concept. आपको थोड़ी देर के बाद और बेटर समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए. Let's take a question asked in 2015. When the Reserve Bank of India reduces the SLR by 50 basis points, which of the following is likely to happen? See, it is not important कितना reduce किया या increase किया is only important. Otherwise वैसा समझाना चाहता हूं मैं. 50 basis points, 100 basis points implies 1%. So 50 basis points implies 0.5% SLR reduce हुआ तो क्या हो सकता है? That is the meaning of the question. आप बिना ऑप्शन देके वैसा सोचिए, अगर SLR या CRR reduce हुआ तो RBI is very liberal, lose money policy. तो money with the banks will increase, ये भी ऑप्शंस में हो सकता है. तो मनी सर्कुलेशन विल इंक्रीज, ये भी ऑप्शंस में हो सकता है. तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट में रिड्यूस, ये भी ऑप्शंस में हो सकता है. और आरबीआई इज फॉलोइंग लूज मनी पॉलिसी, ये भी ऑप्शंस में हो सकता है.
तो सी द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जीडीपी हियर. जीडीपी क्या वगैरह बाद में बात करेंगे. जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली. अगर ये थोड़ा 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करने से जीडीपी ग्रोथ रेट ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है तो ये कर ले. फिर ये भी हमको जीडीपी ग्रोथ करना ही एम है ना कोई भी कंट्री का, तो फटाफट कर ले. इसकी कोई लिंक नहीं. वैसा भी ड्रास्टिकली इंक्रीज ऐसा वर्ड्स जब आता है वे आंसर राइट होने का चांस बहुत कम होता है. सेकंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री. अगर एसएलआर थोड़ा कम होने से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज्यादा कैपिटल लेके आता है तो कम कर ले. फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए ना हमको, उसकी इसकी कोई लिंक ही नहीं. अजीब का ऑप्शन है. आपको थोड़ा भी नॉलेज आता है ना देन आपको समझ में आएगा ये सिविल सर्विस एग्जाम कितना आसान बकवास होता है और ऑप्शंस कितना सिली होता है, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं. नाउ यू सी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मे कट देयर लेंडिंग रेट्स. ऑब्वियसली एसएलआर डिक्रीज होगा तो क्या है, मनी विद द बैंक्स इंक्रीजेस. इसका मतलब ये नहीं पक्का इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगा. दैट्स व्हाई यू सी द स्टाइल ऑफ ऑप्शन आल्सो. दे मे कट. सी एक रिड्यूस होने के बाद भी अगर कट नहीं करेगा तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे. सो दे मे कट, देयर इज ए चांस. दैट्स व्हाई सी द आंसर. इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम. वैसा ही ड्रास्टिकली ऐसा एक्सट्रीम वर्ड से मैं एलिमिनेट करूंगा. अदरवाइज इट विल नॉट रिड्यूस द लिक्विडिटी, इट विल इंक्रीज द लिक्विडिटी. बिकॉज सी ये लूज मनी पॉलिसी है. बैंक के पास ज्यादा पैसा है तो ज्यादा पैसा बैंकिंग सिस्टम में जाएगा. सो सी द आंसर. वेरी सिली क्वेश्चंस कम इन द एग्जाम. टेक अनदर क्वेश्चन. सी सेम क्वेश्चन उधर इधर घुमा के बार बार आएगा एग्जाम्स में. He also cannot make new questions. You understand that and make the use of it. When the Reserve Bank of India announces an increase of the CRR, what does it mean? पहले वो बोला SLR डिक्रीज होगा तो क्या होगा, अब बोल रहा है कि CRR इंक्रीज होगा तो क्या होगा. वैसा भी बिना ऑप्शन देख के देखे CRR इंक्रीज होगा तो क्या होगा. दैट मीन्स आरबीआई टाइट मनी पॉलिसी अप्लाई कर रहा है. तो बैंक के पास पैसा कम बचेगा. कम बचेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है. ऑप्शन देखिए. द कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड. सिंपल, ऑब्वियसली डायरेक्टली आंसर है. उनके पास कम पैसा बचेगा. नो नीड टू रीड इवन द अदर ऑप्शंस. अदरवाइज जस्ट पढ़िए. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव लेस मनी टू लेंड. मीनिंग लेस रिजर्व बैंक विल लेंड. द यूनियन गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू लेंड. यूनियन गवर्नमेंट कहां से आया. कमर्शियल बैंक्स विल हैव मोर मनी टू लेंड. वे उल्टा हो गया. बी सी अजीब का ऑप्शन है क्योंकि उनको 4 ऑप्शन बनाने का और कोई चांस चॉइस नहीं था इसलिए कुछ लिख लिया. डी तो उल्टा है, ये करेक्ट है. सी हाउ सिली. नाउ कम बैक टू द कंसेप्ट. सो क्या बात कर रहे हैं हम. सो बैंक के पास पैसा है. समटाइम्स यू नो बैंक में रिक्वायर लोन फ्रॉम आरबीआई. बैंक को कभी जरूरत पड़ेगा. अगर बैंक लॉन्ग टर्म लोन लेता है देन कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं, ये सीधा आरबीआई से लोन ले सकता है. So then bank has to pay certain interest to RBI, that is called bank rate. So what is bank rate? It is the rate of interest paid by the banks to RBI when they take long term loan. इस केस में कोई कोलैटरल देने की जरूरत नहीं बैंक को, लोन ऐसा मिल जाएगी लॉन्ग टर्म में. You understand what is bank rate? RBI will decide ये कितना होगा. सिमिलरली अगर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करना है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलजेएफ का मतलब है, ये वर्ड्स माइंड में रख लेना, कहीं भी देखेगा आप जस्ट कीप इन माइंड. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. सपोज बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए फ्रॉम आरबीआई, सो ले सकता है, लेकिन इस केस में विदाउट कोलैटरल नहीं मिलेगा. इनके पास सिक्योरिटीज होना चाहिए, उसी से मिलेगा. कैसा, पहले सिक्योरिटीज बेच दो आरबीआई को, पैसा ले लो, but you have to sign that you will repurchase those securities. That's why it is called. So short term loan में securities बेच के you can take the money, but बाद में आपको securities वापस खरीदना होगा, इसलिए उसको रेपो रेट बोलेंगे. रेपो, रीपरचेज ऑप्शन, मतलब दोबारा परचेज करेगा, नाम से ही लिखा आरजी री पी परचेज, वो ऑप्शन रीपरचेज ऑप्शन, दोबारा वही खरीद लेगा. 100 CR का लोन दे दो, मैं 105 CR से वापस खरीदूंगा, 5% रेपो रेट होगा तो. सो रेपो रेट और पॉलिसी रेट इसलिए है कि आरबीआई सिर्फ रेपो रेट बताएगी, उससे बैंक रेट
मे बी 0.5% कम या मार्जिनल MSF रेट 0.5% ज्यादा, वैसा इसी के जोड़ के होगा। सो पूरा पॉलिसी इससे सेट होता है। सो रेपो रेट और पॉलिसी रेट पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन में बैंक आरबीआई से पैसा ले सकता है, तब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है रीपर्चेज ऑप्शन के हिसाब से, दैट इज रेपो रेट। कभी कभी आरबीआई को भी पैसा का जरूरत पड़ेगा, सो आरबीआई आल्सो कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स, तब आरबीआई भी सेम करेगी, सिक्योरिटीज बैंक को देगी, देन ये लेगा, देन वी कॉल द रेट रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जनरली रिवर्स रेपो रेट से कम होता है। वे कितना कम होगा, मे बी 1% कम होगा या 0.5% कम होगा, ये भी पॉलिसी के हिसाब से आरबीआई डिसाइड करेगी। यू अंडरस्टैंड रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट। सी सपोज बैंक रेट या रेपो रेट इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगा। अगर बैंक को जो लोन मिलने वाला रेट आरबीआई ने बढ़ाया, इसका मतलब आरबीआई टाइट रहना चाहता है, तो ऑब्वियसली बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। मतलब आइडियली बात कर रहा हूं, बढ़ा सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी सर्कुलेशन कम होगा, पीपल वांट टू सेव मनी, दे डोंट स्पेंड, सो मनी सर्कुलेशन विल डिक्रीज। Very simple questions come in exam. Let's understand this. A question from 2013. An increase in the bank rate generally indicates. See, bank rate increase हुआ या repo rate increase हुआ या CRR increase हुआ या SLR increase हुआ, इन सब का मीनिंग है आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जा रहा है और आरबीआई टाइट रहना चाहता है। इसका मतलब है आरबीआई इज फॉलोइंग टाइट मनी पॉलिसी। इन दैट केस बैंक के पास कम पैसा बचेगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का चांस है एंड मनी सर्कुलेशन डिक्रीज होगा। ये सारे लिंक्ड है। सो इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट ऑप्शन ए मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। ये उल्टा है, ये लाइकली टू इंक्रीज है, बिकॉज बैंक रेट ज्यादा हो गया। अगर बैंक ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेके आके आपको कम में तोड़ा देगा, क्यों देगा? सो इट इज नॉट गोइंग टू फॉल, इट इज गोइंग टू राइज। सो ऑप्शन ये गलत है। बी सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, इट्स वेरी रूड एंड एक्सट्रीम। नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स, व्हाई? इट गिव्स लोन्स। बैंक रेट इंक्रीज हुआ डजंट मीन दैट मैं लोन नहीं देना चाहता हूं। सी सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी, ये भी उल्टा हो गया। इट्स नॉट इजी मनी पॉलिसी। इजी मनी पॉलिसी होगा तो बैंक रेट को कम करो, पैसा इजी करो लेना में। सो क्यों बैंक रेट भी इंक्रीज कर रहे हो? इसका मतलब है टाइट मनी पॉलिसी फॉलो कर रहा है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Getting me? Take one more question. The lowering of bank rate by the Reserve Bank of India leads to. इसी एक बार इंक्रीज पूछेगा, एक बार डिक्रीज पूछेगा, और वे भी क्या करेगा? यही तो घुमा घुमा के पूछेगा। Don't mug up all these things. Understand with common sense so that you can answer any question. अगले साल जैसा भी आएगा आपको फर्क नहीं पड़ेगा once you understand. The lowering of bank rate by the Reserve Bank of India leads to. अगर बैंक रेट रिड्यूस होगा तो क्या होगा? इसका मतलब लूज मनी पॉलिसी, दैट मींस बैंक के पास ज्यादा पैसा, देन इंटरेस्ट रेट में डिक्रीज। ऑप्शन ये मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, ऑब्वियसली ज्यादा पैसा, बिकॉज बैंक रेट डिक्रीज होगा तो इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा। लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, उल्टा हो गया। नो चेंज इन द लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट्स बाय कमर्शियल बैंक्स। सो ऑब्वियसली यही द आंसर। Getting me? One more concept we understand. What is inflation? वे डिटेल में अगले टॉपिक्स में देखेंगे, बट थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। सपोज यू सी सप्लाई और आउटपुट डिक्रीजेस। अगर सप्लाई कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। एक और रीजन है डिमांड बढ़ने का। अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया, then everyone has money, then everyone wants to buy a car, then demand increases. So either supply decreases or money supply increases. In both the cases demand increases. Common sense. प्रोडक्ट ही नहीं आपके पास तो डिमांड बढ़ेगा। अगर पैसा ज्यादा है लोगों के पास तब भी डिमांड बढ़ेगा, बिकॉज खरीदने का कैपेबिलिटी बढ़ गया लोगों के पास, तब भी डिमांड बढ़ेगा। सो जब डिमांड बढ़ता है प्राइसेस बढ़ता है, इसको बोलेंगे हम इन्फ्लेशन। दैट मीन्स रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। सो दिस इज ए बेसिक कंसेप्ट। सच सिली कंसेप्ट पे भी क्वेश्चंस आते हैं। लाइक एक क्वेश्चन आया था 2013 में, ये राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में बी कॉज्ड बाय। प्राइसेस क्यों बढ़ता है?
वन, एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, ऑब्वियसली मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो सब खरीदने को तैयार हो जाएगा, तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेगा। सेकंड, ये डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, अगर एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीज हुआ, आउटपुट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। अगर कोई चीज स्कैर्सली अवेलेबल है, उसका दाम ज्यादा होता है, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। थर्ड, यानी इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, अगर डिमांड ही बढ़ रहा है, सीधा बोल रहा है, तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तीनों केस में प्राइस बढ़ेगा। बिल्कुल सिली क्वेश्चन, कॉमन सेंस बेस्ड। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है, यू कैन पॉज इट एंड ऑब्जर्व केयरफुली, बिकॉज वीडियो बड़ा हो जाता है ना, अपलोड करने में ज्यादा टाइम लग जाता है, आपको भी ज्यादा डेटा खर्च होगा और डाउनलोड करने में टाइम वेस्ट होगा। नाउ यू सी, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट कुछ भी बढ़ गया, इसका मतलब क्या, आरबीआई टाइट रहना चाहता है। इन दैट केस व्हाट हैपन, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगी, देन मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी डिक्रीजेस। सो अगर मनी सर्कुलेशन डिक्रीज होता है, इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड और प्राइसेस विल कम डाउन। सो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो मनी सर्कुलेशन को डिक्रीज करना है। वे कैसा होगा, इनमें से कोई भी चीज, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट में कोई भी चीज इंक्रीज करके हो सकता है। गेटिंग मी? एग्जाम में कितना सिली क्वेश्चन आते हैं आप खुद देख लीजिए। 2015 का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डोंट लुक एट द ऑप्शन, वैसा भी आप खुद सोच लीजिए, कुछ याद रखने को भी जरूरत नहीं, कॉमन सेंस यूज करिए। इन्फ्लेशन को विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन्फ्लेशन आया फॉर एग्जांपल, क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो आरबीआई क्या कर सकते हैं, मनी सर्कुलेशन को कम कर सकती है। अगर मनी सर्कुलेशन कम करेगा तो प्राइसेस कंट्रोल होता है, इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल। सो मनी सर्कुलेशन कम करना कुड बी एन ऑप्शन, कुड बी द आंसर इफ इट इज गिवन। और मनी सर्कुलेशन कम करने के लिए क्या करना चाहिए, सीआर टाइट मनी पॉलिसी अप्लाई करना चाहिए। सो टाइट मनी पॉलिसी, आरबीआई शुड फॉलो टाइट मनी पॉलिसी, अगर ये ऑप्शन दिया है तो भी सही है। और क्या होना चाहिए, सीआरआर और एसएलआर और बैंक रेट बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा भी दिया होगा तो सही है, कुछ भी दे सकते हैं, इस साल ये दिया, अगले साल कुछ और देगा। ऑप्शंस देखिए, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। अभी तक यही तो बात कर रहे हैं हम, आरबीआई भी ट्राई कर रहे हैं कंट्रोल करने का। सेकंड, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। सी हाउ सिली। सी, डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। यही है ना, इन्फ्लेशन है, मनी सर्कुलेशन डिक्रीज करे सो दैट मनी कम बचेगा लोगों के पास, देन इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड। डी, इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, वे उल्टा है, और इंक्रीज करेंगे मनी सर्कुलेशन को, और ज्यादा पैसा हो गया लोगों के पास, और ज्यादा खरीदना चाहता है, और ज्यादा डिमांड बढ़ेगा और इन्फ्लेशन होगा। सो राइट आंसर हियर इज सी, decreased money circulation helps in controlling the inflation. Are you getting me? It's not that you have to remember to answer this. No, with common sense we answer this. Why C is correct? Not because you know it, because your sense saying that. So that's why you learn, it will be very easy. एक और वर्ड है MSF रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये भी देखते हैं ये क्या है। सपोज बैंक्स को लोन चाहिए आरबीआई से शॉर्ट टर्म में। सो शॉर्ट टर्म लोन लेने का क्या तरीका है, अपने पास जो सिक्योरिटीज है वे गिरवी रखे, इसका मतलब रेपो रेट के थ्रू ले सकते हैं। बट अज्यूम करते हैं बैंक के पास सिक्योरिटीज खत्म हो गया, बैंक के पास सिक्योरिटीज नहीं है और पैसा की जरूरत पड़ी, एसएलआर का कोटा है, एसएलआर का कोटा में सिक्योरिटीज है बैंक के पास, लेकिन उससे नहीं रख सकते हैं ना गिरवी, अलग से होना चाहिए, अलग से खत्म हो गया, तब क्या कर सकते हैं, एनडीटीएल में 1%, इट में चेंज ऑल्सो, सो ये आरबीआई डिसाइड करेगी कितने परसेंट, बट वेरी मिनिमम लाइक 1%, उतना तक एसएलआर कोटा से सिक्योरिटीज भी निकाल के गिरवी रख के लोन ले सकती है। व्हेन बैडली नीड मनी, सो एसएलआर कोटा से भी कुछ पार्ट रख के गिरवी, उससे लोन ले ले, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट बैंक हैज टू पे टू आरबीआई इज कॉल्ड एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ऑब्वियसली वे बैंक रेट से ज्यादा होगी, समझ रहे हैं ना। सो वैसा सिक्योरिटीज रख के लेंगे तो रेपो रेट है, बट यू नो यू आर टेकिंग इट विथ
एसएलआर का कोटा में से सिक्योरिटीज आप रख रहे हैं, बट ये अनलिमिटेडली नहीं रख सकते। ऐसा नहीं मेरे पास सारे एसएलआर का कोटा का सिक्योरिटीज रखेंगे, लोन नहीं ले सकते, उसमें इतना तक ही ले सकते, देयर इज लिमिट, आरबीआई फिक्स करेगी। सो 1% ऑफ एनडीटीएल, 0.5% ऑफ एनडीटीएल लाइक दिस, सो दैट रेट इज कॉल्ड एमएसएफ रेट। नाउ कम हियर, आरबीआई है, sometimes without involving the banks, RBI can do open market operations. Open market operations क्या होता है? Suppose you see लोगों के पास पैसा ज्यादा है, का मतलब सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन ज्यादा है, आरबीआई उसको कंट्रोल करना चाहता है। इसका मतलब आरबीआई टाइट मनी पॉलिसी अप्लाई करना चाहता है। तो क्या कर सकते हैं आरबीआई, वे सिक्योरिटीज निकालेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और वे बेचना शुरू करेगी। आरबीआई कैन सेल दी सिक्योरिटीज, तो वे सिक्योरिटीज लोगों खरीदेगा, तो लोगों का पैसा आरबीआई के पास आएगा। सिर्फ इतना याद रखिए आप, जब भी पैसा आरबीआई के पास आ रहा है, इसका मतलब है मनी सर्कुलेशन में डिक्रीज हो रहा है, मनी सर्कुलेशन इकोनॉमी में डिक्रीज हो रहा है। और जब भी आरबीआई से पैसा बाहर जा रहा है, इसका मतलब इट इज गोइंग इनटू द सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द मीनिंग। सो इफ आरबीआई सेल दी सिक्योरिटीज, दैट मीन्स इट इज लाइक मनी सर्कुलेशन डिक्रीजेस, राइट? उल्टा भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, कितना सिली क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस रिफर टू, open market operations means between RBI and people. See question, option A, borrowing by scheduled banks from RBI, that is अगर लॉन्ग टर्म लोन होता है तो बैंक रेट बोलेंगे, शॉर्ट टर्म में तो रेपो रेट पे लेगा, दैट इज डिफरेंट। लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंडस्ट्री एंड ट्रेड कहां से आया? सी, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। वेरी सिंपल, परचेज एंड सेल। इट्स नॉट ओनली परचेज लिखा हो तो गलत है, ओनली सेल लिखा तो गलत है, इट्स बोथ परचेज एंड सेल डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर मनी सर्कुलेशन इकोनॉमी में बढ़ाना चाहता है, वे क्या करेगा? परचेज करेगी, सो दैट उल्टा पैसा बाहर जाएगा आरबीआई से। अगर सर्कुलेशन ज्यादा हो गया, उसको कंट्रोल करना चाहता है, आरबीआई क्या करेगी? सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस रिफर टू बोथ परचेज एंड सेल, सो राइट आंसर इज सी। 2013 का क्वेश्चन है, कितना सिली क्वेश्चन आ रहा है आप खुद देख लीजिए। ये क्वेश्चन आया यूपीपीएससी 2010 में, सेम क्वेश्चन, इनफैक्ट इसी से उठाया 2013 में यूपीएससी वाले ने। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिफर्स टू trading in securities, auctioning of foreign exchange, transaction in gold, none of the above. Simple. Trading in securities, trade include both sell and purchase, right? So option A is correct. Silly questions come in the exam, I am again and again telling you. Take one more question from 2012 paper. Which of the following measures would result in an increase in the money supply in the economy? मनी सप्लाई इंक्रीज होना चाहिए इकोनॉमी में। फर्स्ट स्टेटमेंट, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करता है सेंट्रल बैंक ने, तो लोगों से सेंट्रल बैंक के पास सिक्योरिटीज आ जाता है, और सेंट्रल बैंक ने पैसा पे करेगा, तो ये पैसा कहां जाएगा? लोगों में जाएगा, इसका मतलब इकोनॉमी में जाएगा। सो इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सो करेक्ट। सिर्फ इतना सोचिए, जब भी आरबीआई से पैसा बाहर जा रहा है, इसका मतलब मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग। सो आप ऐसा ऑप्शंस ढूंढिए जहां आरबीआई से पैसा बाहर जा रहा है। ऑप्शन 1 में जा रहा है, स्टेटमेंट 1 में, क्योंकि परचेज करेगा तो सिक्योरिटीज को आरबीआई ने पैसा देना पड़ेगा, तो आरबीआई इज लूजिंग मनी, दैट मीन्स दैट मनी इज गोइंग इनटू द इकोनॉमी। सेकंड, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक। See, public or banks, there is no difference. It is all into economy only. Bank में करेगा deposit, फिर withdraw करेगा, that is nothing to do with it. 3, borrowing by the government from the central bank. See, it's a little confusing. आपको लगता है 1 तो सही है, 3 में भी गवर्नमेंट से क्या लेना देना है, but you understand one point here, according to the paper setter, borrowing by the government. अगर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से पैसा borrow करती है, तो बोरो करके गवर्नमेंट क्या करती है? आइडियली बात करेंगे तो अगेन इट हैज टू बी स्पेंट ऑन पब्लिक ओनली,
दैट मीन्स दैट मनी विल कम ईदर इन द फॉर्म ऑफ, चाहे गवर्नमेंट स्पेंड ना करे, कुछ और खरीदे, बट स्टिल द see what is the meaning of government? Government means public. It should come in some form into the public only. That's why आप ऐसा समझ लीजिए, सेंट्रल बैंक से पैसा बाहर गया, इसका मतलब है मनी सर्कुलेशन इकोनॉमी में बढ़ गया। सेंट्रल बैंक के पास पैसा आ रहा है, इसका मतलब सर्कुलेशन डिक्रीज हो रहा है। सो 3 में क्या हो रहा है, सेंट्रल बैंक से पैसा बाहर जा रहा है, सो मनी सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। यू हैव टू टेक दिस आल्सो। फोर्थ, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। ये स्टेटमेंट 1 का ऑपोजिट है। अगर सेल करेगा तो सर्कुलेशन डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, वे तो गलत है। सो द आंसर इज 1 and 3। सो सिर्फ इतना समझ लीजिए, आरबीआई के पास पैसा आया, इसका मतलब इकोनॉमी में सर्कुलेशन डिक्रीज हुआ। आरबीआई से पैसा बाहर गया, इसका मतलब लूज है, लूज मनी पॉलिसी, दैट मीन्स एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी, और यू कैन से circulation in the economy increases. That is the meaning of it. Getting me? See, whatever we have done till now, let's see, just revise it in 1 minute. So we have seen quantitative tools. इसमें पहले हमने देखा CRR, SLR. Okay? See, CRR means cash reserve ratio, cash फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। SLR means statutory liquidity ratio, ये इधर गोल्ड और सिक्योरिटीज फॉर्म में खुद के पास बैंक रखना पड़ेगा। अगर CRR या SLR कुछ भी चीज इंक्रीज हुआ, आरबीआई ने इंक्रीज किया, इसका मतलब है आरबीआई वांट्स टू फॉलो टाइट मनी पॉलिसी और डियर मनी पॉलिसी। दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आई डिड नॉट टेल यू। कॉन्ट्रैक्शनरी मीन्स इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मनी का, मनी सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, राइट? क्यों? इस टाइम पे क्या है, ये ज्यादा होगा तो बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकती है, इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज, सो मनी सर्कुलेशन इन द पब्लिक डिक्रीजेस, देन व्हाट हैपन, इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड। सो कोई भी ऑप्शन हो सकता है आउट ऑफ द क्वेश्चंस, सो यू अंडरस्टैंड दी थिंग्स, डोंट मग अप, अंडरस्टैंड द लॉजिक। देन वी हैव सीन बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, अगर लॉन्ग टर्म लोन लेगा तो कोलाटरल की जरूरत नहीं है, then the rate of interest charged by RBI from bank is called bank rate. So अगर बैंक रेट बढ़ जाती है, that means RBI लोन इतना आसानी से नहीं दे रहा है बैंक को, इसका मतलब है that is called tight or dear money policy. RBI wants to control contractionary money monetary policy apply करना चाहती है, right? ऑफ कोर्स लिमिट है। आपको डाउट आएगा, बैंक आरबीआई से लोन लेके क्यों काम करेगी, बैंक के पास इतना डिपॉजिट्स होता है। दैट्स व्हाई ना, दीज आर ओनली क्वांटिटेटिव टूल्स, आइडियली बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें हमने देखा पॉलिसी रेट और रेपो रेट। सो रेपो रेट फिक्स करेगा तो उसी बेस पे रिवर्स रेपो रेट एंड सारे डिसाइड करेंगे। सो इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म लोन लेगा तो कोलाटरल देना पड़ेगा सिक्योरिटीज, इसको रीपर्चेज ऑप्शन, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेपो। सो शॉर्ट टर्म लेन कोलाटरल चाहिए एंड इंक्रीज करेगा, पॉलिसी रेट इंक्रीज कर रहा है और रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है आरबीआई ने, इसका मतलब अगेन सेम मीनिंग, टाइट और डियर मनी पॉलिसी। सो व्हाट आई एम सेइंग, सीआरआर इंक्रीज हुआ या एसएलआर इंक्रीज हुआ या बैंक रेट इंक्रीज हुआ या रेपो रेट इंक्रीज हुआ, कुछ भी चीज इंक्रीज हुआ, इसका मतलब है ये आरबीआई टाइट मनी पॉलिसी फॉलो करना चाहती है। देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हमने देखा, अगर सिक्योरिटीज खत्म हो जाता है, शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहता है बैंक, देन यू नो एसएलआर की कोटा में से ही कुछ सिक्योरिटीज रख के लोन ले सकती है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ रेट। देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आरबीआई कैन ट्रेड इन सिक्योरिटीज डायरेक्टली विद द पब्लिक। अगर सिक्योरिटीज बेच रहा है, सेल कर रहा है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज मींस आरबीआई सिक्योरिटीज बेच के पैसा लोगों से ले रहा है, तो लोगों के पास पैसा कम होगा, तो मनी सर्कुलेशन डिक्रीज होगा, इन दैट केस इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड। दिस इज द होल थिंग व्हाट वी हैव सीन। नाउ यू सी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होगा तो क्या करना चाहिए, एक लाइन में बताए, सीआरआर बढ़ाए या एसएलआर बढ़ाए या बैंक रेट बढ़े या रेपो रेट बढ़ाए या एमएसएफ रेट बढ़ाए। एमएसएफ रेट से कुछ लेना देना नहीं, वैसा जस्ट माइंड में रखे, या ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सिक्योरिटीज को सेल करे। So in all those cases, money circulation decreases and inflation can be controlled. This is what is all about. अगर उल्टा करेगा तो money circulation increases or deflation can be controlled. That is all about this.
Now you see, we have seen monetary policy में quantitative tools. We have seen CRR, कैश को रिजर्व करना पड़ेगा RBI के साथ, and SLR, खुद के पास बैंक रखना पड़ेगा either in the form of gold or securities. पॉलिसी रेट और रेपो रेट, शॉर्ट टर्म लोन में जो भी RBI से लोन लेना होगा तो it has to be paid. Bank rate is in long term loan. And marginal standing facility rate means when securities is not there, SLR कोटा से कुछ 1% of NDTL तक रख के लोन ले सकता है, that is MSF rate. And open market operations, RBI can directly trade securities with the people. We understand all these? Now we will move on to qualitative tools. Qualitative tools में है loan to value ratio और margin requirements, consumer credit control, rationing, moral suasion, direct action. So let's see one by one. We call these also direct or selective tools, and these are indirect tools. We already have seen all this, right? Now loan to value ratio or margin requirement. इसका मतलब क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, लोन टू वैल्यू रेशियो और कितना मार्जिन. सपोज you want to take a loan on your house, तो RBI डिसाइड करेगी हाउसिंग लोन, हाउस पे लोन लेना है तो कितने % ऑफ द वैल्यू लोन में दे सकता है. सपोज बैंक बोलेगी जितना, सपोज 1 करोड़ वैल्यूएशन है उसमें 60% ही लोन में दे सकते हैं मैक्सिमम, दैट मीन 60 लाख तक ही आपको लोन मिलेगी. सो अगर लोन ज्यादा देना चाहता है, अगर कोई खरीद नहीं रहा है का मतलब सर्कुलेशन बढ़ाना चाहता है, तो क्या कर सकते हैं RBI, लोन टू वैल्यू रेशियो ज्यादा रखेगी का मतलब यू विल गेट मोर परसेंटेज ऑफ द वैल्यू एज लोन. सो आपको सपोज आपको 80% तक लोन मिल रहा है तो ज्यादा पैसा आपको लोन में मिलेगी. 40% तक की लोन में दे रहा है तो 40% तक ही मिलेगी, लाइक दैट. सो लोन टू वैल्यू रेशियो. नेक्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोल. These are not very important, just आप आइडिया लीजिए. सो लोन टू वैल्यू रेशियो मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम में कितने % तक आपको लोन दे सकते हैं. क्रेडिट कंट्रोल मीन्स क्रेडिट कैसा देना. सपोज यू सी टू व्हीलर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग गुड, उसको RBI एंकरेज करना चाहता है तो क्या कर सकता है, उस फील्ड में आपको लोन बहुत आसान करेगी. easy EMI, maybe easy down payment. So you pay 0 down payment, you take a two wheeler and pay monthly very minimum EMI. So then more people will like to take it because it is easy for them to pay. So उसका sales बढ़ेगा. So like that credit control. Credit कैसा देना है, आसानी से देना है या difficult way में देना है. So it can be controlled. Why these are called, all these are selective tools? Because ये sector to sector define कर सकते हैं. सो किसी फील्ड में एंकरेज करना है किसी पर्टिकुलर फील्ड को, उसको क्रेडिट आसान कर सकता है. किसी पर्टिकुलर फील्ड को रोकना है, अगर उसमें ग्रोथ ज्यादा हो रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल में लेके आना, देन उसमें क्या कर सकता है, क्रेडिट मुश्किल कर सकते हैं. सो कैन कंट्रोल डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एक्सेट्रा, वे सारे कंट्रोल करके क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं. गेटिंग मी? लोन टू वैल्यू रेशियो, क्रेडिट कंट्रोल. These two are not very important. Next one is more important. Credit rationing और priority sector lending. अगर RBI को लगता है एक पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा लोन्स दे रहा है बैंक, तो उसमें रेशनिंग कर सकते हैं. बोल सकता है इतना % से ज्यादा लोन उस फील्ड में मत दे दो, रेशनिंग कैप लगा सकते हैं. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. अगर कुछ सेक्टर्स ऐसा होंगे जिसको लोन इतना मिलते नहीं, एग्जांपल एग्रीकल्चर, क्योंकि बैंक इतना रिस्क नहीं लेते हैं, वे ज्यादा इंडस्ट्रीज बिजनेस हाउसेस को लोन में देने को प्रेफर करेगी बैंक. सो इस कुछ सेक्टर्स को जिसके देना चाहिए बट उसको देते नहीं, तो इसलिए RBI कैन कंट्रोल बाय सेइंग दैट मिनिमम इतना % लोन्स इस सेक्टर में देना ही चाहिए. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हम पहले समझेंगे प्रायोरिटी सेक्टर है क्या. वे बहुत बार एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर. सो दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड प्रायोरिटी सेक्टर refers to those sectors of the economy which may not get timely and adequate credit in the absence of special dispensation. So उसको required credit, adequate credit नहीं मिल रहा है अगर स्पेशली उसको केयर ना करेगा तो.
सो एग्जाम में ये पूछेगा बार बार विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कम अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, दैट्स व्हाई आप याद रखिए मेन सेक्टर्स आई एम गिविंग हियर, agriculture, micro and small enterprises, education, weaker sections, housing, export, these all come under priority sector because agriculture को encourage करना जरूरी है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना चाहिए, एजुकेशन, वीकर सेक्शंस, हाउसिंग, एक्सपोर्ट, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू नो बैंक को इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है, इसका लोन्स रिकवर करना मुश्किल लगता है, तो इसलिए दे डोंट प्रेफर गिविंग, सो दैट्स व्हाई दीज आर ऑल अंडर टेकन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। याद रख लेना प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या क्या है। See, there was a question in 2013 paper. You understand कैसा questions आ रहा है। Priority sector lending by banks in India constitute the lending to agriculture, micro and small enterprises, weaker sections, all of the above. Silly question. सारे तो priority sectors है। ऐसा नहीं वे इस साल ये होगा तो अगले साल बदल जाएगा। हमारा इंडिपेंडेंस टाइम पे तो यही प्रायोरिटी सेक्टर है, हम इन्हीं फील्ड में से हम वही हमारा प्रायोरिटी है ना। एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, वीकर सेक्शन, हाउसिंग, एक्सपोर्ट सारे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। कमर्शियल बैंक्स जो इंडियन ऑरिजिन है और फॉरेन बैंक्स विथ एटलीस्ट विथ मोर देन 20 ब्रांचेस इन इंडिया, अगर 20 से ज्यादा ब्रांचेस है इंडिया में, इसका मतलब है उसका पेनिट्रेशन अच्छी है इंडिया में, देन पीएसएल इज 40%। इसका मतलब है जितना लोन्स एक साल में वे बैंक्स दे रहा है उसमें 40% कम से कम इन सेक्टर्स को देना चाहिए। अगर 100 CR लोन में घुमा रहा है बैंक एक साल में, उसमें जरूर 40 CR लोन इन सेक्टर्स में जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? दैट इज व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसका मिनिमम 40% होना चाहिए। वे भी सेक्शनल कट ऑफ भी देखते हैं। एग्रीकल्चर में 10% जाना चाहिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 8% होना चाहिए, मींस टोटल एग्रीकल्चर ओनली। पहले टोटल एग्रीकल्चर 18 था, अगर पहले देखे एग्रीकल्चर का 18 था, ये कब था? प्रीवियस बिफोर अप्रैल 2015। बट उसमें क्या हो रहा था, लोग एग्रीकल्चर में भी कुछ ऐसा रिच फार्मर्स होंगे, वही फायदा उठा रहा था, इसलिए 2015 अप्रैल से आरबीआई ने उसको भी बाइफरकेट करके और डिवाइड किया। एग्रीकल्चर को 10%, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को होना चाहिए 8%। सिमिलरली वीकर सेक्शंस को 10% होना चाहिए। देन माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज, उनको 7.5% होना चाहिए, अदर्स 4.5% होना चाहिए, टोटल 40%। All these commercial banks and foreign banks with more than 20 branches should follow this. फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? अगर बैंक फेल्स टू गिव इट, देन जितना फेल हुआ दैट अमाउंट नाबार्ड टेक फ्रॉम द बैंक। नाबार्ड विल टेक, नाबार्ड मींस नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बारे में हम बैंकिंग सिस्टम में डिटेल में देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में। So that money will be taken by NABARD and put in a fund called Rural Infrastructure Development Fund. वे क्या है? RIDF which is maintained by NABARD. ये भी पूछ सकते हैं कभी छोटी एग्जाम्स में, RIDF is maintained by which bank? Answer is NABARD. Rural Infrastructure Development Fund is maintained by NABARD. ये क्या करते हैं? वे स्टेट गवर्नमेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में लोन में देगा। तो ये बैंक्स को नुकसान है, लॉन्ग टर्म 20 साल 30 साल के लिए पैसा ब्लॉक हो गया बैंक का, इससे अच्छा तो पीएसएल में ही दे दो। गेटिंग मी? सो पीएसएल 40% है, उसका सेक्शनल कट ऑफ भी है, एग्रीकल्चर में 10% एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 8% लाइक दैट। सो अगर ये फुलफिल नहीं किया होगा तो नाबार्ड विल टेक दैट अमाउंट, दैट मच अमाउंट, and it will put into RIDF which will be used to give loans to state governments for long term infra development projects. Getting me? सपोज फॉरेन बैंक्स जिसकी 20 या कम ब्रांचेस है इंडिया में, इसका मतलब है उसका पेनिट्रेशन इतना अच्छी नहीं है, मोस्टली ऐसा ब्रांचेस 20 भी ब्रांचेस नहीं है, इसका मतलब दे मस्ट बी इन मेट्रोस।
अगर मेट्रो में होगा तो वे एग्रीकल्चर में लोन कहां से देगा? इसीलिए उनको कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ पहले इनको 32% था, अगेन सेम जो 2015 में चेंज ले आया, देन इट वाज मैन अनाउंस दैट इट आल्सो विल बिकम 40% इन फेज्ड मैनर बाय 2020. 2% बढ़ते बढ़ते हुए 2020 तक इट आल्सो विल बिकम 40%. बिफोर इट वाज 32%, नाउ 2% बढ़ रहा है. सो बाय 2020 इट विल बिकम 40% इन फेज्ड मैनर. इसका कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ये कहीं भी दे दे, कोई भी प्रायोरिटी सेक्टर में दे दे, बट देना पड़ेगा. अगर नहीं देगा तो क्या होगा? इन केस ऑफ फेल्यूर दैट अमाउंट विल बी टेकन बाय, जितना शॉर्टफॉल हुआ उतना अमाउंट विल बी टेकन बाय सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. वहां नाबार्ड लेगा, यहां सिडबी लेगी. ये क्या करेगी? एससीडीएफ, स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड है, उसमें डालेगी. एंड दिस फंड अगर पूछेगा एससीडीएफ इज मेंटेन्ड बाय, आंसर इज सिडबी, एंड दिस विल बी गिवन टू लोन्स टू स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस. सो ये याद रखें. सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, अगर 20 से ज्यादा ब्रांचेस है फॉरेन बैंक्स का या इंडियन बैंक्स है, देन देर 40% इज पीएसएल. सेक्शनल कट ऑफ भी है. अगर इन केस ऑफ फेल्यूर इट विल गो टू नाबार्ड, विच विल बी पुट इनटू आरआईडीएफ, यूज्ड टू गिव टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म इंफ्रा डेवलपमेंट, इंफ्रा प्रोजेक्ट लोन्स. In case of foreign banks with less than 20 branches, less than or equal to 20 branches in India, then their target was 32% in 2015. Then it was changed, phased manner में it will become 40% by 2020. No sectional cutoff. In case of failure, Small Industries Development Bank of India or SIDBI will take that amount and put it in the SCDF, Small Enterprise Development Fund. So it will give loans to state industrial development corporations. Clear? लेकिन रिसेंटली एक चीज आया, कुछ चेंजेस आया लास्ट ईयर. वन चेंज वाज क्वार्टरली रिपोर्टिंग देन ईयरली रिपोर्टिंग. पहले क्या होता था? ईयरली रिपोर्टिंग होता थे. तो बैंक क्या करते हैं, फरवरी तक किसी अगर प्रायोरिटी सेक्टर में लोन्स देते नहीं था, लास्ट में टू अवॉइड नाबार्ड लेने से, सो लास्ट मार्च में फटाफट दे देते थे. मार्च के लिए जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में फटाफट देता था, तो उस टाइम पे इतना फटाफट देगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जिसको रिक्वायर्ड है उसको देना ही पाएगी. सो मिस यूज हो रहा था, इसलिए क्वार्टरली रिपोर्टिंग कर दिया. सो दैट नाउ 3 मंथ्स में चेक किया जाएगा. सो हर 3 मंथ्स में पीएसएल फॉलो करना चाहिए. सो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंड, सो थोड़ा बिगिनिंग से कंटिन्यूसली उस पर एफर्ट रहेगी, तो राइट रिक्वायर्ड डिजायर्ड क्लाइंट को, जहां रिक्वायरमेंट है लोन की, जो छोटी सी फार्मर है गरीब का, उनको मिलेगा. सो दैट इज द आइडिया. सो दिस हैज कम ए चेंज. The next concept is PSL certificates. It was into news. They were introduced in April 2016. That's why just एक बार समझ लेते हैं क्या है. डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. नाउ यू सी, सपोज एक बैंक है, वे अपना पीएसएल टारगेट अचीव नहीं किया. दूसरा बैंक है, वे पीएसएल टारगेट से ज्यादा किया, अचीव करके, और भी सपोज 40% पीएसएल इफ द बैंक इज एन इंडियन बैंक. Suppose a bank 50% of the loans given in PSL and another bank was falling short of 40%. Then this bank can purchase a certificate from the bank which has an excess of PSL. So that is what is PSL certificate introduced recently. I just read out, don't take it too seriously. The instruments are aimed at achieving the priority sector lending target and sub-targets by purchase of these instruments in the event of shortfall and at the same time incentivize banks with a surplus. तो जिसका शॉर्टफॉल हुआ वे खरीद सकते हैं. नाबार्ड में देने से ये अच्छी बात है ना. नाबार्ड में जाएगा तो 20 साल के लिए पैसा तो फंस गया, एंड जो टारगेट रीच किया उसको इंसेंटिव है, बिकॉज दी सर्टिफिकेट्स आर कॉस्टली, because they will sell it, those excess wala banks. So that's why it is just a kind of to encourage that kind of banks like RRBs, certain cooperative banks. So they always do give loans to poor, they give to
agriculture and all. So they always fulfill this target. So they can sell these certificates to certain commercial banks which fall short of this. That is the idea. Getting me? Just no need to go deep into this. You see, if a question comes, maybe you know what is PSL certificate, which was into news recently. It could be asked. So PSL certificates are instruments that you know a particular bank which is falling short of PSL can purchase these certificates from the bank which has an excess of PSL. That's it. Nothing more to know. Clear? थोड़ा डिटेल में जाते हैं. सपोज क्या होता है, समटाइम्स यू नो इजी क्वेश्चन पूछना होगा तो क्या होगा, सीधा पूछेगा व्हाट आर पीएसएल सर्टिफिकेट्स. समटाइम्स क्या होगा, 2 या 3 स्टेटमेंट्स देके उसके बारे में एंड विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऐसा भी पूछ सकते हैं. सो दैट्स राइट. नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब है सपोज एक बैंक जिसका पीएसएल शॉर्टेज है वे पीएसएल सर्टिफिकेट खरीद लिया जिससे एक्सेस है. तो क्या है, सिर्फ सर्टिफिकेट खरीदा, इसका मतलब है जस्ट अकाउंट में दिखाने के लिए, जो उसका शॉर्टफॉल फुलफिल करने के लिए. इसका मतलब ये नहीं है उसका लोन का रिस्क उठाया. सपोज मेरा बैंक है, मैंने पीएसएल एक्सेस कर दिया तो मैं आपको सर्टिफिकेट भेज रहा हूं, तो मैं सिर्फ सर्टिफिकेट भेज रहा हूं सो दैट यू कैन शो इट टू आरबीआई. इट डजंट मीन दैट लोन मुझे ही वसूल करना है, ये मेरा काम है और इंटरेस्ट भी मैं ही लूंगा उससे. सो इट्स ऑल माय रेस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम नॉट ट्रांसफरिंग एनी रिस्क और एनी एसेट टू यू. You are only getting certificate from me so that you can show my credit. You can use it. You can show it to RBI. That means you are using that PSL of mine to show. That's why you are paying something to me. Getting me? So the seller will be selling fulfillment of priority sector obligation and the buyer would be buying the same. There will be no transfer of risk or loan assets. Hope you understand risk. अगर लोन नहीं पे किया मैंने, नुकसान मुझे है, आपको कुछ लेना देना नहीं उससे, क्योंकि लोन ने मैंने दिया. आपने सिर्फ वे रिकॉर्ड्स में दिखाने के लिए, पीएसएल फुलफिल करने के लिए सर्टिफिकेट खरीदा मेरे से. दैट्स इट. यू हैव नथिंग टू डू विद द लोन. गेटिंग मी? पॉइंट नंबर 1. वे ट्रेड करने के लिए का मतलब एक्सेस वाला बैंक सेल करेगा, जो शॉर्टफॉल वाला खरीदेगा. उसके लिए एक पोर्टल किया, सीबीएस, सेंट्रल बैंक सिस्टम सीबीएस पोर्टल, ई कुबर. सो द पीएसएलसीज विल बी ट्रेडेड थ्रू द सीबीएस पोर्टल ई कुबर ऑफ आरबीआई. सो अगर कहीं ये पूछने का चांस बहुत कम है, अगर कहीं आपको दिखेगा ई कुबर क्या है, इसका मतलब एक सीबीएस पोर्टल ऑफ आरबीआई है टू ट्रेड पीएसएलसीज. ओके. Who can sell? Who can buy? Of course, anyone can sell, anyone can buy. But you see, certain banks, वे मैं types of banking में बताऊंगा, certain banks को like certain cooperative banks को PSL लागू ही नहीं होता है. अगर PSL itself is not applicable for that bank, then obviously that bank cannot sell this. सो जिस बैंक का पीएसएल लागू होता है वे अपना पीएसएल टारगेट पूरा करने के बाद जो भी एक्सेस है वे सर्टिफिकेट फॉर्म में बेच सकता है. ओके. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ये सारे टाइप्स ऑफ बैंकिंग में मैं बताऊंगा, अभी इतना टेंशन मत लीजिए. सो आरआरबीज, लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हु हैव originated PSL eligible category loans subject to such regulations as may be issued by the bank. They are all eligible. Okay. First point, there are 4 types of PSLCs. One is for agriculture, PSLC agriculture. So agriculture का shortfall है, agriculture का excess है, so agriculture में trade होगा. PSLC small farmers and marginal farmers, वे अलग से certificate है. PSLC माइक्रो एंटरप्राइजेस अलग से सर्टिफिकेट है एंड PSLC जनरल अलग से सर्टिफिकेट है. तो सपोज मे भी एग्रीकल्चर का डिमांड ज्यादा है एंड सिर्फ मेरा बैंक पे एक्सेस है तो मैं ज्यादा कीमत को बेचूंगा सर्टिफिकेट, लाइक दैट. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ PSLCs. गेटिंग मी? सपोज यू सी, consider the following statement with respect to PSL certificates. 1. PSL certificate are
उसकी डेफिनेशन दे दूंगा, ठीक है। सेकंड, देर आर लेट अस से 6 टाइप्स ऑफ पीएसएलसी, समथिंग लाइक दिस। ऐसा पूछने का चांस कम है, फिर भी सेफ साइड देख लेते हैं। सो व्हाट ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट पीएसएलसी इज, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पीएसएलसी। जिस बैंक के पास एक्सेस पीएसएल टारगेट है वे शॉर्टफॉल वाला बैंक को बेच सकता है सर्टिफिकेट फॉर्म में। सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें सिर्फ सर्टिफिकेट दे रहा है, इसका मतलब लोन का रिस्क या एसेट्स नहीं दे रहा है, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है, एक ई कुबर एक सीबीएस पोर्टल है आरबीआई का दो जिसपे ट्रेड कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है, कोई भी बैंक जिसका पीएसएल एप्लीकेबल होता है वे ट्रेड कर सकता है। फिफ्थ, फोर टाइप्स ऑफ पीएसएलसीज है, दैट्स इट। दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू नो अबाउट पीएसएलसीज व्हिच वाज इनटू न्यूज़ लास्ट ईयर। गेटिंग मी? लास्ट वन, moral suasion. सो द आरबीआई एडवाइजेस, मोरल सुएशन का मतलब सेमिनार्स वगैरह में बुलाएगा बैंक्स को। सो आरबीआई कैन एडवाइज द कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स, आप ऐसा करो, इंटरेस्ट रेट कम करो। सो आरबीआई कैन डायरेक्टली एडवाइज देम आल्सो। सो दैट इज व्हाट मोरल सुएशन इज। यू अंडरस्टैंड दिस? लेट्स टेक a simple question which was asked in 2012 paper. The Reserve Bank of India acts as bankers bank. This would imply which of the following? So Reserve Bank of India को bankers bank बोलेंगे, क्यों है? One, other banks retain their deposits with the RBI. So other bank retain their deposits with RBI, सही है. The RBI lends funds to the commercial banks in times of need. Yes, commercial banks को अगर जरूरत पड़ेगा तो RBI lend करेगी. Third, RBI advises the commercial banks on monetary matters. Yes, RBI advises, that is what is moral suasion which we are seeing. So this is also correct. So all three statements are correct. So what all we have seen in qualitative tools, let me revise in 30 seconds. First we have understood margin requirements or loan to value ratio, का मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पे कितना परसेंट तक लोन दे सकता है डिसाइड करेगा आरबीआई, सो दैट सर्कुलेशन ऑफ मनी ज्यादा करना या कम करना, दैट इज आल्सो कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। सेकंड, क्रेडिट कंट्रोल, सो क्रेडिट इजी करना या डिफिकल्ट करना इट कैन बी डिसाइडेड, लाइक डाउन पेमेंट्स कितना करना है एंड कितना इंस्टॉलमेंट्स देना है वगैरह। थर्ड, रेशनिंग और पीएसएल। सो प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या है इंडिया में, पहले ये याद रखिए, एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एजुकेशन, वीकर सेक्शंस, हाउसिंग, एक्सपोर्ट, लाइक दिस। नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पीएसएल, विल सी दैट moral suasion is the other one, that means similar kind का मतलब आरबीआई कैन एडवाइज द कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स, right? If nothing work out, direct action can be taken. Now you see, in case of PSL failure, agar if they are Indian banks or foreign banks with more than 20 branches in India, then PSL is 40%. सब टारगेट भी है, कैसा? एग्रीकल्चर में 10%, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स 8%, वीकर सेक्शंस 10%, माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड खादी विलेज इंडस्ट्री 7.5%, अदर्स 4.5%. Agar in case of failure, what happened? That will go to NABARD, it will put into RIDF, and that amount will be used to give loans to state governments for infra development. You all know that, right? If foreign banks with less than or equal to 20 branches in India, in that case PSL was 32%, but from last year on से लेके phased manner में 2020 तक 40% को increase करने को propose किया गया। In case of failure, it will go to SIDBI, it will put into the SCDF and loans given to state industrial development corporations. So this is about PSL failure. Getting me? Next concept, PSL certificates. So what are those? These are sale of fulfillment of priority sector obligation, but no risk or loan asset is being transferred. Okay. Second, trade through the CBS portal e-Kubar. Third, any bank जिसका PSL applicable होता है they can trade. Fourth, four types of PSLCs are there: agriculture, small and medium farmers, and micro enterprises, and general. Getting me?
there are certain limitations to monetary policy. One is high deposits with the commercial banks. बैंक्स के पास इतना डिपॉजिट्स है, स्पेशली टाइम डिपॉजिट्स इतना ज्यादा है, तो दे डू अकॉर्डिंग टू, दे हैव लॉट ऑफ मनी. सो आरबीआई की कंट्रोल अगर 0.5% सीआरआर और एसएलआर चेंज होता है तो भी इट हार्डली अफेक्ट्स दिस. सो दिस इज वन रीजन. लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. अगर सबके अकाउंट्स है, सारे इस सिस्टम में है, लाइक आरबीआई बैंक को कंट्रोल करेगी, बैंक लोगों को कंट्रोल करेगी, मींस फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं होगा तो हाउ इन्फ्लेशन वगैरह चीज कंट्रोल कर सकते हैं. ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशन, सपोज क्रूड ऑयल का प्राइस चेंज हो गया तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आया, सो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गया, देन आरबीआई कैन नॉट डू एनीथिंग. सो देयर आर लिमिटेशंस. एक्सेप्ट there was a committee with Urjit Patel as chairman. So Urjit Patel committee was made to revise and strengthen this monetary policy framework. So his report came in 2014 January. We just see highlights of that. All are not important, just one point is important, I will tell you. He told to consider CPI instead of WPI. CPI means Consumer Price Index. WPI means होलसेल प्राइस इंडेक्स. सपोज इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए होलसेल मार्केट में देखने से कंज्यूमर लेवल से देखेंगे, सो बेटर समझ में आएगी. सो दिस इज, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज सीपीआई, व्हाट इज डब्ल्यूपीआई इन कमिंग टॉपिक्स. अभी आप चिंता मत करिए, वी डोंट बॉदर. सो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी. Inflation target he told to keep 4% plus or minus 2%. That means 2 to 6 ka bracket. This is ideal for Indian condition. He asked government to support RBI because RBI has to answer to, is answerable to parliament, right? So government को RBI को support करना है. RBI will take the responsibility and RBI to fix accountability. Accountable होना चाहिए. So government को फिस्कल कंसोलिडेशन पे ध्यान देना चाहिए. व्हाट इज फिस्कल कंसोलिडेशन आपको नेक्स्ट टॉपिक में बेटर समझ में आएगा. इसका मतलब डेफिसिट कम करके रेवेन्यू बढ़ाना है का मतलब स्पेंडिंग कम करके. सो फिस्कल गवर्नमेंट के पास स्टेट कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है. वी विल अंडरस्टैंड ऑल दोस, डोंट वरी. पॉलिसी रेट डिसाइडेड बाय एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. सो दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट नाउ, दैट्स व्हाई आई टोल्ड ऑल दिस. जस्ट फोकस ऑन दिस. Otherwise, this is all 2014. Now, no relevance. Policy rate decided by Monetary Policy Committee. Let us see what is Monetary Policy Committee. So he told this, he gave the suggestion in 2014. Accordingly, government has accepted, and June 27th, 2016, don't try to remember the date, nothing required. The government amended the RBI Act 1934 to hand over the job of monetary policy making to Monetary Policy Committee. First point is, this Monetary Policy Committee came into existence by amending RBI Act 1934. That's it. अगर कहीं स्टेटमेंट फॉर्म में आपको दिखता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज फ्रेम्ड इन इंडिया बाय अमेंडिंग द आरबीआई एक्ट 1934, यस, इतना याद रखिए. पॉइंट नंबर 1. सेकंड, इसमें टोटल 6 मेंबर्स होंगे. इस कमिटी में 6 मेंबर्स होंगे, इतना समझ लीजिए. 6 में कौन है? 3 आरबीआई तरफ से होंगे, 3 होंगे गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी. So total 6 members होंगे, उनमें 3 from RBI, 3 are nominated by government. Clear? Now no need to mug up. Maybe छोटी एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है who are they. That's why I am giving the names. Otherwise no need to worry. The members from the central bank are RBI governor. One governor होगा, उर्जित पटेल है प्रेजेंट गवर्नर. एक डिप्यूटी गवर्नर है आर गांधी, and RBI nominated executive. Okay, Michael Patra. So these are 3 people from RBI side. UPSC के लिए कोई काम का नहीं. UPSC never ask such questions. But maybe state exams में rare cases में कभी पूछेगा तो, otherwise तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं. Okay. See, 10% of questions नहीं भी आंसर कर पाएंगे ना, कोई बात नहीं, हम 90 पक्का करेंगे. 10 करने के चक्कर में 90 को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे. पहले 90 हम ध्यान से समझ ले और याद रखें. सो उसके बाद अगर टाइम होगा तो नेक्स्ट राउंड में हम ये भी देखेंगे. So I don't recommend otherwise.
Other 3 members are nominated by the government. Currently, the 3 members are Chetan Ghate, Pami Dua, and Ravindra Dolakia. So, anytime they may change and all. Otherwise, these external 3 members will hold office for 4 years and are not eligible for reappointment. Clear? So, Monetary Policy Committee आया by amending RBI Act of 1934. Second point क्या 6 members होंगे, 3 from RBI, 3 from government nominated, and these nominated members have 4 years life and after that they are not eligible for reappointment. बस इतना आप समझ लीजिए. No need to remember mug up the names. उजित पटेल जी को तो याद रखिए, he is the present governor. Not very important, just for an idea. All members will have a vote each. In case of a tie, the governor has a casting vote. Okay. So 6 members vote करेगा. अगर टाई होगा तो गवर्नर casting vote होगा. अभी क्या होता है, ये MPC बनाने से पहले गवर्नर हैज ओवरराइडिंग पावर्स टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट. गवर्नर खुद बनाता है अपना पॉलिसी. ऑफ कोर्स डिप्यूटी गवर्नर्स एंड ऑल दे रिकमेंड, बट इट इज अप टू द गवर्नर वेदर टू एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोज रिकमेंडेशंस और नॉट. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड, सो ट्रांसपेरेंसी आएगी. दैट इज द आइडिया. And what is the target? You know that 4% inflation is the target, plus or minus 2%. This is the target. Suppose if the targets are not met, 4% target with band of 2%. आगे पीछे 2% means 2 to 6%. If the targets are not met for 3 consecutive readings, the MPC will have to give in writing to the government why it failed to meet the desired objective. So it is to take the accountability. Nothing to mug up, just सुन लिया छोड़ दो बस. So because of this, the MPC improves transparency and brings a collective approach to the inflation problem. According to the mandate, the MPC will have to release the minutes of the meetings 14 days after the meet, which are expected to reveal how a member voted and why. Even they have to tell why they have voted, why for that kind of policy. So there is a transparency. Getting me? So this is all about Monetary Policy Committee. Right? What we have seen, limitations we have seen. What are the limitations? Like high deposits with the commercial banks, lack of financial inclusion, and global market, crude oil. Similarly, Urjit Patel Committee का हमने देखा recommendations, CPI लेना instead of WPI, inflation target to keep between 2 to 6, policy rate decided by Monetary Policy Committee. It is accepted. And the Monetary Policy Committee, it was set up by amending the Reserve Bank of India Act 1934, point number 1. Point number 2, there will be 6-member panel, 3 from RBI and 3 from government. The member appointment for 4 years and not eligible for reappointment. Council members, government nominees. In case of failures, MPC shall in the report give reasons for failure, remedial actions as well as estimated time within which the inflation targets shall be achieved. So they take the responsibility. Getting it? So this is all about this monetary policy. Thank you for watching.